Hey everyone, welcome back to my channel, The Stylish Cutepie. Please, if you liked my video, please like, share and subscribe. Today's video, I will share with you non-transferring makeup, just like hashtag masks proof makeup. So let's get started. Step first, rub eyes within your face, just like you. Guys, if you liked my video, please like, share and subscribe. Let's go next step. Step first, aloe vera gel for blur your pores and prime your skin. And massage it properly, just like this and this. Especially in T-zone area, pores are very opened in my skin. For next step, I am using likme 95cc cream instant skin styling SPF 30. Take it in a palm and dot. ढेर सारी बिंदियाँ बना लो अपने चेहरों पे एंड इसे ब्लेंड करो. Now dab and it's cover all my skin. And इसके बाद हम लोग इसे ब्रश से ब्लेंड करेंगे. स्टेप होगा कॉम्पैक्ट. ये कॉम्पैक्ट है लाइकमे 95 प्राइम प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन. इसे भी हम ब्रश से ही लगाएंगे. बेसिकली उस एरिया में ज़्यादा लगाइए जहाँ पे आपका स्वेटिंग ज़्यादा होता है. तो जस्ट लाइक मास्क पहनने के बाद हम लोग को तो ये एरिया मतलब पूछो ही मत, पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है. इसलिए यहाँ पे तो खास करके अपना लगाइए पाउडर. एंड ब्लेंड इट वेरी 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 स्मूथली. नेक्स्ट मेकअप इज़ क्या करें, मास्क पहने ज़्यादा मेकअप ही नहीं कर सकते, बट क्या करूँ. लेट्स गो इन आइज़. तो इसके लिए ये क्या स्विस ब्यूटी बोल्ड मैट लिप लाइनर ले रही हूँ मैं. इससे मैं अपने आइज़ पे ब्लेंड करूँगी. Blend it very well. This looks very natural, not look very over. And then
स्मज प्रूफ करूँ या फिर आईलाइनर बनाऊँ? स्मज करते हैं, ये ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। अप्लाई काजल वेरी डार्क। एंड विंग्स तो बिल्कुल मत निकालना। एंड देन वी आर मर्ज इट। तो यही करिएगा कि विंग्स ना निकले, क्योंकि हम लोग जब इसे मर्ज करेंगे तो विंग्स ऑटोमेटिकली काजल फैल कर ये विंग्स बन जाएंगे। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टार्टिंग में बिल्कुल ही ना करें विंग्स। एंड नाउ मस्कारा। ये मस्कारा है लाइकमे एब्सोल्यूट का। आईब्रोज मैं इसके लिए भी पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। काजल वेरी लिटिल अमाउंट एंड अप्लाइड। मास्क पहनने के बाद ज़्यादा हम लोग के फेस पे तो जाता नहीं है, जो भी है बस यही है, तो इतना में ही कुछ कर लेते हैं। बाय द वे दिस इज़ ओके बट आईज इज़ नॉट ओके। so we are using this for eyebrows. आईब्रोज को शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारे पूरे फेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। एंड नाउ वी आर रेडी, बट इफ़ यू लाइक इट यू कैन अप्लाई ब्लश, बट आई डोंट ओनली नॉट वेरी मच प्रिफर, बिकॉज कौन इतना करता है डेली के लिए, तो बिल्कुल नहीं। बट आई विल यूज़, अभी के लिए मैं डेली के लिए यूज़ नहीं करती। गुलाबी गुलाबी गाल हो गए मेरे तो। गुलाबी गुलाबी गाल। And so now blend it very fine and thick. You can see next step is lip balm. लिपस्टिक अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। हो गया। ये लुक है फॉर डे, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर पार्टी, तो उसके लिए आप बस ये हाइलाइटर यूज़ कर लीजिए। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दिस शेड इज़ फॉर हाइलाइटर। एंड या अपने नोज़ को हाईलाइट कीजिए, अपने चिक्स को हाईलाइट कीजिए। हो गया। एंड अपने आईज़ के लिए मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ। डार्क बिल्कुल कॉपरी शेड है, जिसे मैं बस यहाँ पे हल्का सा इसे करिएगा, क्योंकि वैसे पार्टी में आप कर सकते हैं। मैं इसे भी अपने हाथों से ही कर रही हूँ। एंड आई विल अगेन पिक दिस शेड एंड यहाँ पे रखूँगी मैं।
for highlighting my eyebrows. Now done. एंड दिस, बाय द वे ये मेकअप फिक्सर है जिससे आपका मेकअप थोड़ी देर के लिए फिक्स हो जाता है। तो सुखाओ। नाउ माई मेकअप इज़ डन। आई एम शो सम वन हेयर स्टाइल फॉर मास्क जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू इट बीच का मांग फाड़ना है एंड बस हो गया। Done. And now I am using N95 masks for corona. Oh, by the way, अरे यार, now I will show you my makeup. Hey friends and hey everyone, if you like it my video, please like, share and subscribe to my channel. Please show more love for my channel. Well, I will grow up. Please, thank you for watching this video. Bye.